Dear students, a very good morning to all. Welcome you all to BA Part 2 English Literature class. Today we are going to discuss P.B. Shelley's poem Ode to the Skylark Part 2. As I told you that P.B. Shelley is a romantic writer. He is known for his imaginative as well as optimistic aspect and revolutionary spirit. Ode to the Skylark, as the name indicates, this poem is addressed to a skylark. In the first stanza of this poem, he addresses the skylark as the happy spirit. He says that I welcome you. You are not a bird, for you were never born one. You are a spirit who from a great height in the sky pour forth your exuberant songs of natural and spontaneous melody. कभी कहता है कि तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ क्योंकि तुम आकाश में बहुत ऊंचाई पर गाते हो और तुम कभी गाते हुए दिखाई भी नहीं देते हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ को हम महसूस कर सकते हैं। सेकेंड स्टैंजा में कहता है यू शूट अप फ्रॉम द अर्थ एंड फ्लाई हायर एंड हायर लाइक ए क्लाउड ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए फायर। यू फ्लाई अक्रॉस द ब्लू स्काईज एंड सिंग एज यू फ्लाई। द हायर यू फ्लाई द स्वीटर डज योर सॉन्ग बिकम। वो कहता है कि तुम जमीन से बहुत ऊंचे उठते हो, बहुत ऊंचाई पर तुम्हारी उड़ान होती है, तुम धुएं के बादल के समान हो। तुम नीले आकाश में जब उड़ते हो और गाना गाते हो, तुम्हारा गाना उतना ही मधुर होता जाता है जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इन द थर्ड स्टैंजा ही सेज इन द मॉर्निंग व्हेन द सन इज राइजिंग एंड इट्स गोल्डन रेज आर एडिंग लस्टर टू द क्लाउड्स इन द स्काई, the skylark drifts through the sky like a joyful and happy spirit set free from the shackles of its material form, that is body, beginning its heavenly career. कवि कहता है कि जब शाम को सूर्य छिप रहा होता है, उसकी स्वर्णिम किरणें आकाश को जगमगा रही होती हैं, तब स्काईलार्क आकाश में खुशी से झूम रहा होता है। In the fourth stanza, he says, the dim but brightening twilight of the evening makes way for your flight and then close in upon you so as to make you invisible like a stream, the sky during daytime. But even though you have become invisible, your loud and joyful music can yet be heard. कवि कहता है कि अलसाती हुई संध्या थक जाने के बाद अपनी लालिमा स्काईलार्क के आसपास बिखेर देती है। दिन के समय आकाश को सजाने वाले तारों की आभा भी प्राय लुप्त हो जाती है। उन्हीं तारों की तरह तुम भी दिन में अदृश्य हो जाते हो, किंतु कभी फिर भी स्काईलार्क के हृदय को पुलकित और उल्लसित करने वाले गीत को सुन पाता है उस धुंधलके में भी। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर whose intense lamp narrows in the white dawn near. In the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. Keen edge are the arrows. अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शैली ने इस पोएम में सिमिली का बहुत ज़्यादा यूज किया है। एज, सो, लाइक, सो एज, सो, जस्ट, ये सब वर्ड्स जब यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए तो उसे हम सिमिली कहते हैं। इसके हैंडआउट में आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। सो हियर द पोइट कंपेयर्स the skylark with the rage of the moonlight. So he says, keen edge are the arrows. Keen, sharp, clear and distinct, तीव्र, स्पष्ट दिखाई देने वाला। Arrows, sharp beams of the moon. Arrow वैसे तो तीर को कहते हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा की सूक्ष्म किरणों के लिए तीर का उपयोग किया गया है। You are as sharp as the arrows as the sharp beams of the moon are. ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर, सिल्वर स्फीयर डिस्क जो होती है मून की, वो सिल्वर कलर की दिखाई देती है। सिल्वर स्फीयर मीन्स मून, चंद्रमा। द शिल डिलाइट ऑफ द बर्ड इज एज कीन एज द बीम्स ऑफ द मून। स्काईलार्क पक्षी जो होता है उसकी आनंदपूर्ण तीव्र ध्वनि, उसके मधुर संगीत की, वो चंद्रमा की किरणों की भांति बहुत ही शार्प होती है। Whose intense lamp narrows. Intense lamp narrows. Bright light becomes fainter and fainter. जिस तरह से जैसे ही सूर्य का आगमन होता है, चंद्रमा की जो रोशनी है वो धुंधली पड़ती चली जाती है। In the white dawn clear.
in the white dawn, in the light of the early morning before sunrise. Until we hardly see, we feel that it is there. We hardly see, we do not see, but we can feel it is there. We hear the music and so know its presence, but it is not seen. अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? The poet says that during the night, the moon sheds its bright light upon the earth, but the same bright light begins to fade with the coming of the morning. In the light of the morning, the moonlight disappears. Although the moon now becomes almost invisible, yet we are aware that the moon is still in the sky. In the same way, the skylark is invisible to our eyes, but we are listening to its music. We know it. We know that it is in the sky. रात के समय चांद की चांदनी जो होती है पृथ्वी पर बिखरी हुई होती है, किंतु जैसे जैसे सुबह होती है चांदनी फीकी पड़ती चली जाती है। सुबह के उजाले में चांद की चांदनी गायब ही हो जाती है। यद्यपि चांद हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी हमें ज्ञात होता है कि चांद आकाश में ही है। इसी प्रकार स्काईलार्क पक्षी जो है वो भी हमारी आंखों को दिखाई तो नहीं देता, किंतु हम उसके मधुर संगीत को सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि वह आकाश में उड़ रहा है। So that is there. So now let us come to the next stanza. All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare. From one lonely cloud, the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. All the earth and air. All the earth and air means the whole atmosphere, whether it is the earth or the sky. Everywhere on the earth and in the sky, हर जगह, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी. With thy voice is loud. Thy voice, the bird's song. It can be listened to everywhere, whether it is the sky or the earth. With thy voice is loud, as when night is bare. Night is bare means when the sky is cloudless in the night. जब आकाश में बादल नहीं होते, बादल रहित आकाश होता है रात्रि के समय में. From one lonely cloud. One lonely cloud from one solitary patch of cloud. The moon rains out her beams. Rains out, sends forth her beams, her rays, and heaven is overflowed. Heaven, the sky, overflowed, flooded with light. The sky is full of moon's light and the bird's song at the time when there are no clouds in the sky. So the writer says that the song of the skylark pervades the earth and the sky, and the whole world is filled with it, just as the sky is overflooded with the light of the moon, sending forth its beams from behind a solitary cloud on an otherwise cloudless night. The points of comparison in this poem are: just as the moon itself is hidden by a cloud, so is the skylark invisible in the distance. Just as the moonlight, in spite of the clouds, spreads over the sky completely, in the same way the skylark's song, in spite of the distance, fills the whole of the upper and the lower regions with its sound. कवि कहता है कि स्काईलार्क जो होता है वो बहुत ही मधुर संगीत गाता है और उसकी जो मधुर तान है वो संपूर्ण वातावरण में गूंजने लगती है। फिर कभी स्काईलार्क की तुलना बादल रहित आसमान से करता है और उस रात्रि से करता है जब चांद अकेला होता है, अपनी किरणों से आकाश और पृथ्वी को आप्लावित कर देता है। स्काईलार्क का गीत भी इसी तरह पूरी पृथ्वी और आकाश में रम जाता है। उनका गुंजन स्पष्ट सुनाई देता है। जैसे चंद्रमा स्वयं बादल में छिपा रहता है, उसी तरह से स्काईलार्क पक्षी भी छिपा रहता है, दूर से दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बहुत हाइट पर होता है। और जिस तरह से बादल के होते हुए भी चंद्रमा की रोशनी पूरी तरह से आकाश पर छा जाती है, उसी प्रकार से स्काईलार्क का गाना भी बहुत दूरी के होते हुए भी आकाश में ऊपर और नीचे हर जगह पृथ्वी पर सुनाई देता है। What thou art, we know not. What is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. What thou art, who you are. Thou means you, art means are. What you are, तुम क्या हो,
What is your reality? We don't know. We know not. We don't know. We are unaware of this fact, who you are. What is most like thee? We do not know any other bird that is like you. तुम्हारे समान अन्य कौन सा पक्षी है ये भी हमें नहीं पता. From rainbow clouds there flow not drops so bright to see. Rainbow clouds, clouds which are transfigured by the rays of the sun. Flow, pour forth, बरसाते हैं. Drops, drops of rain, so bright to see, which are very bright when we see them. As from thy presence showers a rain of melody. Rain of melody, pouring forth the bird's song. So here the writer says that the real nature of the skylark is not known to us. It is not even possible for us to understand or to compare any other bird with the skylark, who is similar to this bird. As it flies up and up, it sends a shower of rich music to us on the earth. The music flows from the skylark. It is much more pleasant and bright. Even then, the bright and shining raindrops falling from the clouds. The poet says that the bird is something mysterious and unique. He says that the drops of rain that fall down from clouds surrounding a rainbow are peculiar, shining because of the sunshine behind them. But even this beauty is nothing in comparison to the sweetness of the songs that the skylark sings. कभी कहता है कि स्काईलार्क क्या है, कैसा है, ये हमें ज्ञात नहीं है और हम ये सोचते भी नहीं है कि ये किससे मिलता जुलता है, किसके सिमिलर है. ये संभव नहीं है हमारे लिए जानना. किंतु जैसे आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ता रहता है, आकाश से पृथ्वी पर एक मधुर संगीत बहता रहता है. यद्यपि गर्मी के पश्चात जब बरसात की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो बड़ा आनंद और आराम प्राप्त होता है हमें, परंतु स्काईलार्क का गाना उससे भी अधिक आनंद देने वाला है. कभी कहता है कि स्काईलार्क पक्षी रहस्यमय है, अनोखा है. वर्षा की बूंदें जो बादल से गिरती हैं और इंद्रधनुष के चारों ओर होती हैं, विशेष रूप से चमकदार होती हैं क्योंकि उनके पीछे सूरज चमकता रहता है. किंतु ये सौंदर्यपूर्ण आभा भरल पक्षी या स्काईलार्क पक्षी जो है उसके गानों के मिठास के सामने नगण्य है, उसकी कोई महत्व नहीं है. So let us come to the next stanza. Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fear it heeded not. Like a poet hidden. The skylark bird is just like a poet who is hidden. छिपा हुआ है, जो कि कहाँ छिपा हुआ है? In the light of thought, अपने विचारों में डूबा हुआ है. He is always engrossed in his own thoughts. हमेशा अपने विचारों में ही डूबा रहता है कवि. Singing hymns unbidden. He sings, he composes hymns, poems. Unbidden, spontaneously. Poem comes to him spontaneously, automatically. Singing hymns unbidden till the world is wrought. Till the world is wrought. Till the world is ended. इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं चलता. To sympathy with hopes and fear it he did not. He did not care, pay no attention to. So, here in these lines, the poet says that the skylark is just like a poet. He compares it to a poet, the height to which a skylark soars and the dazzling light of the sun there prevent us from seeing it. So the very sublimity and brilliance of a poet's thoughts prevents him from being understood. The skylark sings from heaven or near it. The poet's songs are likewise hymns, that is, they deal with lofty themes. As the bird sings from within, so also the skylark. So also the poet is unbidden. As the lark's song breathes a joy not known to but envied by human beings, so also the poet sings. कवि कहता है कि स्काईलार्क पक्षी की तुलना एक कवि के साथ की जा सकती है. जिस तरह से कवि के विचार लोगों की समझ में नहीं आते, उसी तरह से स्काईलार्क पक्षी आकाश में
बहुत ऊंचाई से उड़ता हुआ जब गाता है तो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या गा रहा है। कभी के गीत भी बहुत ही उच्च विचारों से युक्त होते हैं। जिस प्रकार पक्षी प्रभावपूर्ण गीत गाता है, उसी प्रकार कभी भी बिना किसी बंधन के आत्म प्रेरित होकर के गाता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है। जिस प्रकार स्काईलार्क पक्षी उसी खुशी से सांस लेता है जिसे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उससे मनुष्यों के द्वारा ईर्ष्या की जाती है। इसीलिए कभी मनुष्यों में नई आशाएं और नए भय उत्पन्न करता रहता है। टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट ही डिड नॉट। जिन आशाओं के बारे में हमें नहीं पता, जिन नए भय के बारे में हमें नहीं पता, एक कवि की पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है, उनके बारे में पता चलता है। सो थैंक यू ऑल। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पोएम वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट lecture.